सर जैसा कि हम आपको अमेरिका से संबंधित पहले भी कई वीडियोस दिखा चुके हैं। हाँ और आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका मिलिट्री पावर में कितना ज्यादा सक्षम है और ताकतवर है। बिल्कुल यार, हर तरह से पावरफुल होते हर तरह से। और आज का जो हमारा वीडियो है हाँ थोड़ा एक हम कह सकते हैं कि वो इमेजिनेशन है। अच्छा अच्छा वैसे ऐसा असल में होना तो बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन अच्छा कि अगर अमेरिका एक तरफ हो हाँ और उसके अगेंस्ट में पूरी दुनिया की मिलिट्री लड़े हाँ तब क्या होगा और कौन जीतेगा। अच्छा ये हमारी वीडियो का टॉपिक है। अच्छा अच्छा हालांकि फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ हाँ तो अगर ऐसा कुछ होता है तब क्या होगा यही वीडियो हमें आज बताने वाली है। अच्छा अच्छा तो मैं चाहता हूँ आप इसे देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या सर, वैसे तो मैंने अमेरिका की मिलिट्री देखी हुआ कि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल है। यहाँ तक मेरे मन में अभी तक मैं देखता हुआ आया हूँ क्या कि एक तरफ तो खाली सारी दुनिया की मिलिट्री और एक तरफ खाली ये अमेरिका की मिलिट्री। हम सब अगर इनको आप तोले तो वजन आपको बिल्कुल एक सौ का मिलेगा। ऐसा है सर जी, मैंने यहाँ पे देख के कई फिल्में देखी मैंने, और यही देख के मुझे ऐसा लगता है और ऐसा अंदाज हुआ है कि ना अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, ये मेरा मानना है। लेकिन क्या है, बात तो ये है सर कि जैसे चाइना है, रशिया है और इंग्लैंड, ये भी कम नहीं है, और जैसे हमारा भारत वो भी कम नहीं है। अब देखना ये है कि अगर कभी ऐसा मौका कभी आए तो आखिर होगा क्या, देखना ये अपने को। सर जी लगाइए इसी बात पर। A superpower is defined as a state with the ability to exert influence or project power on a global scale, and if needed, in more than one region of the globe at a time. The United States, currently the world's sole superpower, fits this description. ये दुनिया के एकमात्र है, अलावा इसके अलावा तो कोई है भी नहीं। हर जगह तो मिलिट्री बिठा रखी है उसने। ये बात तो सही है। With an official military doctrine that states its military forces must be ready and capable to fight two major theater wars simultaneously, a capability no other nation on Earth can even approach. But what would happen if the United States found itself in a war against the entire rest of the world? How would that war potentially play out? The rules of this war game will be as follows. No nuclear weapons allowed. अच्छा यार, ये काम तो बहुत बढ़िया करा उनने कि किसी को भी परमाणु हथियार की छूट नहीं दे रहा होगा। परमाणु हथियार तो एक ही बार में खत्म कर देगा। तो इससे अच्छा तो यही है कि बराबर, मतलब किसी को भी परमाणु हथियार की इजाजत मत दो और सब नॉर्मल लड़ाई लड़े, एक जैसी, मुकाबला बराबरी का रहेगा। And war will be simulated to have broken out after weeks of preamble, as in a surprise attack, the United States with its forces spread around the world would likely lose its non-homeland forces entirely, but not before delivering crippling blows to most of the world's major powers and knocking them out of the conflict early. The US's main opposition would be in the form of a European coalition to include Russia and a China-India alliance. अच्छा अब देख लो दीदी, आप ये जो तीनों है ना, ये बाकी इतने दिग्गज है कि इसके बारे में सोचेगा। The rest of the world's contribution would be mostly in material supplies or financial backing. अच्छा ये जो युद्ध होगा ना चाचा जी, तो ये तीन लोग लड़ेंगे युद्ध अमेरिका से, भारत, चाइना और रशिया। अच्छा, जो बाकी जो देश है वो इनको सामान मुहैया करेंगे। As while even nations like Japan boast a formidable military capability, they mostly lack the ability to actually deploy that power outside of their own borders. In fact, that would be the biggest hurdle to any global offensive against the United States. With historical military preparations focused on conflicts such as NATO versus Russia or China versus India, most militaries around the world lack the ability to transport military hardware across the oceans in a meaningful quantity, making a decisive assault against the US homeland impossible. अच्छा, ये जो दूसरा देश जो है, इनकी इतनी क्षमता नहीं है कि ये अपना हथियार जो है समुद्र के जैसे में दूसरी जगह ले जाए। और वो अमेरिका के पास क्षमता भरपूर है। सवाल ही हर जगह, तो वो तो हर जगह जा सकता है। हर जगह फैली भी है ना इसकी ताकत। ये है। Meanwhile, due to its commitments to fighting wars well outside its own borders for the last 80 years, the United States operates the world's largest air and naval transport fleets. अच्छा, देखा आपने, यानी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह हमला करने की क्षमता रखता है वो। That number in the hundreds of ships and aircraft, more than most modern nations combined.
This lack of mobility will prove to be a major weakness for the global alliance and severely hinder their ability to respond to US actions. Today, the United States operates its forces in every geographic area of the world and has split its command structure into 9 combatant commands, 6 responsible for global geographic areas of responsibility. देखो चाचा जी हाँ। कि उनने हर जगह तो सेना बिठा रखी हाँ। है। कहीं से भी कोई भी चू कर दिया कि वो वहीं से उड़ा देगा, मार देगा। यानी ये समझ लो कि उसको छेड़ना, सबके दिल में हाथ डालना। जैसे वो शतरंज में गोटियां कैसी जमी रहती हैं, हाँ। उसी तरीके से इनने पूरी दुनिया में अपनी वो बिछा रखी है उसने गोटियां एक तरह की। और तो वो कहीं से भी एक समझ लो उसके लिए दुनिया एक शतरंज ही है हाँ है कि वो कहीं से भी उड़ा देगा, फायर कर देगा, मार देगा। In the weeks leading up to the outbreak of war, the United States would likely pull its forces out of Europe and non-American bases in the Pacific, disbanding its European, African, and Southern commands. Pacific Command, Northern Command, and Central Command would absorb these forces. Battlefield 1, Middle East. U.S. Central Command would receive an influx of former European assets, with the U.S. bolstering its forces in the Middle East in bases in Afghanistan and Iraq with one goal: destroying the major oil refineries and distribution centers. क्या है कि ये वीडियो पुरानी हो सकती है क्योंकि अब अफगानिस्तान में जो इसके सेना है नहीं, अफगानिस्तान से इसके सेना कभी जा चुकी। मिडिल ईस्ट में काफी सेना बैठी हुई, while denying access to the sea lanes that transport oil from the region. 81% of the world's oil reserves are located in OPEC countries, and over 60% of the world's oil passes through the Arabian Sea alone. The US's strategic goals would be simple: shut off the global oil tap. भैया अगर ऐसा अगर होता है तो ये समझ लो इसकी राजनीति इतनी खतरनाक हो जाएगी कि इसका अपन सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में अकल पड़ जाएगा चाचा। बिल्कुल पड़ जाएगा, बिल्कुल जरा ही। With the world's 12th largest oil reserves, the United States could easily supply itself while denying the rest of the world access to vital Middle East oil. अच्छा, वारे पटे अमेरिका तेरे दिमाग की तो मेरे को दाद देनी पड़ेगी। तूने अपने लिए तो तेल इकट्ठा कर लिया और दूसरे हम देशों को तो किल्लत दे सकता है। ये तो मैं आज बनूं पड़िया यार। यही तो चाचा जी युद्ध होता है, सामने वालों को हराना कैसे, उसकी कमजोर नस को पकड़ना। सही। Europe, which would represent the United States' most formidable adversary, relies on Middle East oil for 40 to 50% of its total annual use, meaning an American stranglehold on the region would cripple any European war effort as reserves run out and their economies begin to collapse. China would face a similar problem, as 50% of its total oil imports all come from the Middle East, making the region the first front in our war. देखा आपने, सबसे पहला अमेरिका ही हमला करेगा और उसने अगर तेल रोक दिया तो ये समझ लो कि पूरा देश सभी सारे देश कमजोर पड़ जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी कभी और वो हमला भी कर सकता है। अभी तो उनने क्या है तेल की सुते होगी, अब आगे देखो आगे क्या होता है, देखना वो तो हर बात से मार देगा। देखते हैं देखो क्या है नहीं। At the outbreak of war, the United States would first strike at oil production and distribution facilities across the Middle East via carrier-based strike aircraft backed up by former European theater aircraft now based off American bases in Iraq and Afghanistan. With the world's largest air tank, अरब देशों में जो तेल के कुएं हैं उनको तो एक तरह से उड़ा देगा, तो ये क्या कर लेंगे अमेरिका देश का? अरे मैं कह रहा हूँ बहुत दिक्कत आ जाएगी, चल तो हाँ को मच जाएगी। हाँ वो तो है। fleet, and flanking the all-important Persian Gulf from both Iraq and Afghanistan, American aircraft could penetrate deep into Middle East territory with impunity, striking at targets from the Straits of Hormuz all the way to the Suez Canal itself. यार अगर ये कहे कि अमेरिका में ये जिज्जे चलते चाहे तो हवाई कर दे तो क्या दूसरे देश को नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। हाँ। Though regional forces would be able to offer some initial resistance, most operate outdated Soviet-era or non-modern American-built aircraft, with the exception of current U.S. allies such as Saudi Arabia, who would be able to field modern variant F-15s, Typhoon Eurofighters, and Italian-British Tornado multi-role strike aircraft. ये 3 देश हैं खाली जो इनके पास नए टाइप के विमान हैं। सऊदी, ईरान और पाकिस्तान, बस ये है 3 देश हैं। Aircraft in small numbers. Without European support, however, the air war would go very poorly for Middle East powers for several reasons. Firstly, lacking a joint unified command, each nation would be unable to coordinate its air assets with its neighbors, resulting in confusion and low sortie rates. Most Middle East powers also field very few electronic warfare or early warning and control aircraft,
Turkey, Saudi Arabia, and Israel would represent the most formidable threats to American air power, yet neither nation fields dedicated electronic attack aircraft, while the US is equipped with over 200, mostly F-35 variants and EA-18G Growlers. कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरे देशों को ऊपर इतने विमान ही नहीं है जितने विमान अमेरिका के पास अमेरिका के विमान होंगे भी ना हाँ, चाचा जी हाँ। तो इतना आधुनिक नहीं होंगे हाँ जो अमेरिका के पास है। हाँ अरब देश जो है आपस में लड़ते रहते हैं ये लोग, तो अभी दूसरे तो ये क्या दूसरे से क्या लड़ेंगे? सही बात है। आपस में फुर्सत नहीं लगे दूसरे हाँ Without adequate numbers of AWACS and electronic warfare assets, Middle East powers would be unable to coordinate the large amounts of sorties needed to counter US air power, and they'd find their aircraft and ground-based air defenses actively jammed or spoofed by American EW assets. In the opening days of the Middle East War, the US would likely see moderate casualties among its air forces, as it would be mostly operating against obsolete aircraft and disorganized or inexperienced air forces. The greatest threat to US craft would come from ground-based air defenses, which range in obsoletism yet remain a formidable obstacle to US air power. क्या अगर जैसे युद्ध अगर छूटता है तो थोड़ा वक्त वो लड़ने में कर पाएंगे, एकदम पावरफुल नहीं कर सकते। हाँ तो थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक है कि नुकसान होना। चाचा जी मेन वजह ये है कि जो दूसरे देश है ना उनके पास पुरानी वाली टेक्नोलॉजी, वही इनके पास है सब नई टेक्नोलॉजी। With a concentration of American power in the region, it's a foregone conclusion that Middle East powers would have begun to move their air defenses to protect vital oil shipping routes and manufacturing/distribution centers. Yet Desert Storm proved how effective the United States can be at dismantling a nation's air defense network, and most nations in the region have invested little into modernizing their defense infrastructures in the years since. ढांचे ही इनने कमजोर बनाया है। अमेरिका वाला तो 1 मिनट में ध्वस्त कर देगा। अब वो जो नेटवर्क जो है आपका अगर उन्हें शुरू में तोड़ दिया, आप ये मान कर चलो कि आपको बर्बाद हो रही हो तबाह करने में देर नहीं लगी। The US would suffer most of its losses to its fourth-generation aircraft, such as its F-15, F-16, and F-18s, while its fifth-generation F-35s and F-22s would prove much more difficult to contend with. With an inventory of 385 active F-35s, over 1,800 more on order, and 197 F-22s, the US retains the only operational fifth-generation air fleets, with current allies fielding a token force of F-35s purchased from America, and the Russians and Chinese still not fielding combat-ready fifth-generation aircraft. सारे तो आधुनिक हथियार लेके लड़ेगा अमेरिका। अभी तक जो वीडियो चल रही है, आप ये मान के चलो अमेरिका भारी पड़ गया। Despite its technological and operational superiority, however, sheer numbers would present a threat to American forces. So instead of seizing key oil production or distribution facilities, the US would instead focus its efforts on keeping those facilities and trade route choke points shut down while defending against attacks on its air bases. A single sunk supertanker could block the Suez Canal for weeks. अमेरिका कितना चला गया है, वो मिलिट्री को निशाना नहीं बनाएगा, जो तेल का जो ठिकाना है ना, पहले निशाना उनको भी लगा देगा। सही बात है। यानी कितनी चलेगी, कितना दिमाग दो आप। Shutting down one of the most important oil trade routes in the world, while constant harassment by American air power would make the Straits of Hormuz impassable. With few major naval threats in the Pacific, American Pacific naval forces would be split between containing China and bolstering US Central Command forces in establishing a blockade of trade routes across the Pacific and Indian Oceans. देखो चाचा जी कि कहाँ है अमेरिका, है ना, और कहाँ उसने सेना बिठा रखी है। और दूर भी तो सबसे देशों इतनी दूर होने के बाद भी अगर उन्हें ये खेल वो चाहेगा ना, वो सारे खेल देगा, जहाँ चाहेगा वहाँ खेल देगा। व्यापारी हमने कमर तो उन्हें यूं तोड़ दी, फिर बेचा गया। अभी भारत, चीन और रसिया बचे हैं। अब इनका दाव देखेंगे कि ये क्या खेलेंगे दाव। With 20 carriers, 11 of which are super carriers, more than the rest of the world combined, a blockade of the Indian and Pacific Oceans would be easily achieved. With a staggering 80% of global oil trade passing through the Indian and Pacific Oceans, the rest of the world would be forced to abandon any plans to attack the US homeland and first try to dislodge the Americans from the Middle East. Yet they would be doing so while operating on a ticking clock as domestic oil reserves begin running dry.
In a prolonged conflict, immediate development of oil reserves in Russia would begin, though with only 80 billion barrels of proven reserves versus over 800 billion in the Middle East, it would be imperative. ये भी तो बात सही है कि रशिया में भी तो बहुत तेल निकलता है। हाँ, यानी रशिया भी ये मान के चलो अपने तेल को निकल के संघर्ष कर सकता है। हाँ। For the global coalition to dislodge the US from the region or face eventual oil starvation and defeat. Sahi. Europe would be faced with the difficult decision of committing the majority of its air and naval power to a Middle East campaign, Achha. yet with an American Navy larger than the next 8 navies in the world combined, they would be doing so at the risk of leaving their coasts vulnerable to harassment from American attack submarines Achha. and carrier strike groups. आठ सेनाओं के दुनिया की। एक अकेली उसकी दो सेना है, अब कितनी ताकत उसकी है। अब ये देख लो कि यूरोप वाले भी आ गए मैदान में। हाँ। American attack submarines in particular would prove to be an overwhelming force, with 55 nuclear attack subs alone. Europe, to include Russia, fields nearly 100 submarines, yet only about a third of those are nuclear powered and range from 10 to 25 years behind US subs in tech. Lacking in major transport capabilities, 10 से 25 साल पीछे हैं दूसरे। अरे बाप रे बाप यार, मैं से टेक्निक के बारे में तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा दुनिया में कमाई को करी टेक्निक की कमाई करी अमेरिका ने। हाँ। तो टेक्निक कितनी है इसके पास यार। और देख लो आप, वो उसी टेक्निक के बलबूते पे तो सब पे भारी पड़ लिया हाँ। अमेरिका। and the ability to adequately protect either their sea lanes or any attempts to move troops by sea, the global coalition would be extremely hard-pressed to dislodge the US from the Middle East. While an eventual overwhelming of US ground forces would be possible, it would take weeks of buildup and slow moving of forces via ground routes to avoid American. यार मेरे को तो ये लग रहा है कि वो एक कहावत सुनी आपने, एक अकेला 10 पे भारी, मेरे को वो वाला अंदाज दिख रही है। हाँ, सही कह रहे हो चाचा जी, बिल्कुल। हाँ। ये अमेरिका को अगर खदेड़ भी पाएंगे ना, हाँ। तो ये आसानी से नहीं खदेड़ पाएंगे, और ये धीरे धीरे कर पाएंगे। Submarines. Victory in the Middle East would be possible for the global coalition, but would only come at great expense of dwindling oil reserves, and any attempts to reopen the Middle East trade routes would certainly fail, as the US would concentrate its nuclear attack subs and carrier battle groups in the region. अरे यार एक बात ही देखी चाचा जी आपने कि तेल का कितना बड़ा वो है, हाँ। जो मतलब महत्व है, हाँ। कि वो तेल के ऊपर ही फोकस करे जा रही है। हाँ, वो जो तेल को जने की मतलब बहुत बड़ा योगदान है एक तरह का तेल का भी। बहुत बड़ा। हाँ, हर चीज तो तेल से चलती है। ये क्यों बोल रहे हो बाबू है यहाँ पे? ये बात है, इतनी जगह तेल तो सबसे क्या नहीं चल रहा तेल से? ये प्लेनों से जो हमला कर रहे हैं तो ये काहे से चल रहा है? ये बता दो। तेल से चल रहा है। तेल से ही, और क्या है? The coalition would be forced to rely on existing land-based pipelines, though these would not be enough to sustain the world economy, and the United States would certainly commit its stealthy B-2 bombers to the destruction of these pipelines and बाप रे बाप। ओहो। अब वही देख लो, अगर वो हमला करता है, तेल की जो पाइपलाइन है उस पर अगर बम गिरा दिया उसने तो क्या कर लोगे? वो लाइन ही फोड़ देगा तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं होना। any attempts at building new ones. In short, a land victory would be probable for the global coalition, but without the ability to challenge the US Navy, global trade routes would be permanently shut down. जमीन तो तुम बचा लोगे, हाँ। लेकिन समंदर पे तो राज अमेरिका ही करेगा। रास्ते में व्यापार होता है। हाँ। अब वही रास्ता अगर उन्होंने बंद कर दिए तो फिर व्यापार तो होना ही नहीं है ना। वो बंद नहीं करेगा, वो रास्ता समंदर के रास्ते पे ही बैठा हुआ है वो। मैं वही तो कह रही हूँ। हाँ। हाँ। Effectively crippling the economies of coalition nations and the war effort. Battlefield 2, West Pacific. The West Pacific and South China Sea is the most economically important waterway in the world, with a full 1/3 of all global trade passing through the area, or about $5.3 trillion. China, South Korea, and Japan would especially have a vested interest in keeping these sea lanes open, yet none of those nations field a true blue water or deep ocean navy. In a global war, the United States would invest the majority of its expeditionary firepower in the West Pacific, having little to fear from an Atlantic incursion by European powers due to their lack of major military transport capability and navies designed for decades to engage Russian ships in literal combat rather than blue water operations. ये जो हिस्सा है समुद्र का, वाकई में ये मान के देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भी। मुझे तो ये देखने में आ रहा है हाँ। कि जो दूसरे देश हैं उन्होंने अपनी पानी वाली सेना को इतना मजबूत नहीं बनाया, ये और अमेरिका ने अपनी सेना को, पानी वाली जो सेना उसकी, उसने बहुत मजबूत बनाया। उसी से चुल खाएंगे, चुल खाने का कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता अगर चुल खाने का है तो एक रास्ता यही है। हाँ।
Japan would pose a significant challenge for US forces due to its very modern and robust self-defense forces, yet the island nation could be largely ignored due to Japan's lack of air tankers, limiting the range of its strike aircraft and 70-year self-defense military doctrine, which saw the nation only recently begin to build an expeditionary capability. With 155 F-15s making up the bulk of Japan's air force and only a combat range of 790 miles, it is doubtful the island nation would risk its 5 operational airborne refueling tankers. जापान एक कहने को छोटा देश है, लेकिन देखो कितना कटर हो रहा है यार। हाँ सर जी, आप कह रहे हो कि ना जापान जो है खतरे में डालेगा, तो खतरे में तो उसको डालना ही पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि युद्ध शुरू जो हो चुका है, या तो लड़ो या मरो, बस दो में से एक काम होना है। To attempt offensive operations against the US Navy and its over 1,000 fighter aircraft, instead holding its air forces in reserve in case of an American attack on the homeland. मेरा ऐसा मानना है कि ये जापान देश जो है ये हवाई हमला अमेरिका पे कर सकता है, मेरा ये मानना है। The US's first goal in the region would be to cut off all trade routes passing through the South China Sea. China would represent the US's biggest global adversary, yet like every other global power, to include Russia, it too lacks the navy. यार ये तो मैं ऐसा लग रहा है कि जंग नहीं देख रही हूँ, शस्त्र की चालें देख रहा हूँ, जी हिसाब से उन्हें बिछाई। चीन और रूस कहने को जाओ इतने बड़े हैं, लेकिन पानी वाली सेना उनकी भी कमजोर है। And the transport capability to actually threaten the US homeland. In order to deny the nation the opportunity to build this capability, the US would immediately move to cut off Chinese trade through the South China Sea, something China would be particularly vulnerable to, as over 60% of its trade is delivered by sea. Though China lacks a navy formidable enough to threaten US Pacific forces, it more than makes up for this shortcoming with its ballistic missile forces. Its DF-26 ballistic missiles each have a range of 3,000 to 4,000 kilometers. 3-4 किलोमीटर तक मार कर देते हैं, ये बड़े खतरनाक है तो भैया बहुत खतरनाक है। ये मत समझो कि वो हर देश के पास है आजकल। हाँ आपको समझिए, मैं लेकिन वो जो सबसे वो चीन को कहने को वो कह, लेकिन वो भी कमजोर पड़ी है यार। And would threaten any US base or ship as far out as Guam. At the outbreak of war, China would immediately launch a withering missile strike against American facilities on Guam. While Guam would be defended by THAAD, or Terminal High Altitude Area Defense Anti-Missile Systems, Aegis-equipped destroyers and Patriot missile batteries, China would rely on heavy saturation strikes and overwhelm American missile defense systems. देखो चाचा जी, ऐसा है कि ये देखो आप कहना कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर कभी वो कुछ होता है तो अमेरिका पहले से तैयार, उसने सेना को अपनी ऐसी बिछा रखा है कि वो हमले के लिए तैयार है। हमले के लिए भी और बचाव के लिए भी। बोला ये उन्हें कितनी तैयारी कर रखी है, जबकि अभी ऐसा कुछ है नहीं। Decimating the majority of American ground targets on the small island and rendering it inoperative as a military forward staging area for weeks. This would force America to rely on its naval assets in the region, which would be the secondary targets of China's opening barrage. मतलब उनका कहने का ये है कि उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा खासा। Though long touted as carrier killers, China's DF-26 and DF-21 ballistic missiles each rely on a very long and complex kill chain, or chain of military assets required to recon a target, track it, and guide a missile to it. In order to accomplish this, China operates 30 Yaogan tracking and reconnaissance satellites grouped into constellations that, working together, would provide China 16 opportunities per 24-hour period to accurately target a US Navy vessel to within 10 kilometers anywhere in the Pacific. एक बार देखने में यार चीन भी हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है भैया यार, ये टेक्नोलॉजी में आगे है वो बहुत ज्यादा। हाँ, अमेरिका को चीन बहुत सताएगा, आसानी से जीतने नहीं देगा। भाई वो हारेगा जरूर, लेकिन पसीना ला देगा। आप कैसे कह सकते हो कि वो हारेगा? दुनिया एक तरफ है, वो एक अकेला है। The US would certainly seek to counter this capability with deployment of its anti-satellite weapon systems, of which it remains extremely secretive about. ये गुप्त है। एंटी सैटेलाइट प्रणाली, और वो भी इतनी गुप्त है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता है कि वो क्या है। हाँ बोलो आप।
क्या कमाल की चीज है यार। It is impossible to infer just how effective US anti-SAT weapons truly are due to a lack of information, but it is known that in the early 2000s, the US Air Force successfully tested a deployment of mini-SATs designed to kill or hijack enemy satellites, and in 2008, the US successfully targeted and destroyed a defunct satellite with an SM-3 missile launched from the USS Lake Erie in the Pacific. अच्छा 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 अच्छा। अरे भैया ये तो इतना खतरनाक है ना कि दूसरे देशों के सैटेलाइट फोड़ सकता है हाँ। अरे बाप रे बाप। अगर इसने सैटेलाइट को फोड़ दिया हाँ। तो अपने तो इंटरनेट फोन सारे सब ठप पड़ जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। अरे मतलब कितना बड़ा नुकसान है यार। बहुत नुकसान है ये फिर तो। बोलो आप। With every US destroyer and cruiser able to carry the SM-3, this could potentially pose a serious threat to Chinese space assets and degrade the capabilities of their ballistic missile forces. ये आपने उतना अगर करेगा दूसरों को सैटेलाइट को फोड़ दो ये ना बिल्कुल यानी उसका आगे दूसरे को कुछ लगी नहीं रही हिसाब से देखा जाए तो। मतलब ये है चाचा जी कहना चाह रहा हूं, कमर तोड़ देगा वो सैटेलाइट फोड़ दी उन्होंने। In a push into the Pacific, however, the US would still suffer heavy casualties among its fleet due to Chinese long-range missile strikes. It's probable then that while it works to destroy Chinese space assets from afar, America would instead send its nuclear attack submarine fleet to blockade Chinese waters. China operates about 60 submarines. चाइना के पास भी 60 पंडुक है भी। हाँ यार जब तुम ये कह रहे हो वो क्या हम सैटेलाइट फोड़ देंगे तो चीन तो चुप बैठेगा नहीं, वो तो मीटिंग में मिसाइल मार देगा। Yet for years, those subs did not go on patrols or even leave port as they were often sidelined by maintenance issues. Only as recently as 2011, लो साहब चीन के पास है इतने सारे। हाँ। अब वो कहीं जाते थे नहीं, खड़े रहते थे, वो खराब नहीं होगा। ऐसा है चाचा जी कहना, अभ्यास जरूर रहता है लेकिन वो तुम्हें चलाना याद नहीं, फिर वो अभ्यास भी तुम्हारा किस काम का हो। the Chinese subs actually begin to leave port, giving US subs the opportunity to tail them and discover that Chinese submarines were surprisingly easy to find and track due to their noisy nature. Defense experts estimated that Chinese sub technology was 10 years behind Russia and about 20 years behind the US. The US, meanwhile, operates 55 nuclear attack submarines, with most of these being of the modern Virginia class. Armed with torpedoes and a complement of Tomahawk cruise missiles, Virginia attack subs could easily threaten Chinese surface and subsurface vessels. देखा अमेरिका की जो पंडुकी है वो कितनी एडवांस है, हर चीज लगी हुई है उसके अंदर। और दूसरों का जो है वो खाली प्लान की है, उनकी जो टेक्नोलॉजी वो सब पुरानी है। And join its Ohio-class ballistic missile submarines in cruise missile attacks against Chinese inland industrial and military installations. While in recent years, China has invested heavily into improving its anti-submarine warfare capabilities, it is still critically behind even regional powers. इतना पैसा लगाने वाले पीछे। और वो चीन की जो पंडुकी है वो खड़ी के खड़ी रह जाएगी और अमेरिका की पंडुकी मार के चली भी जाएगी। Such as South Korea and Japan, meaning that in the end, there is likely little China could do to stop US attack subs. एक बार समझ में मेरे ये नहीं आ रही है कि आप चीन और अमेरिका के क्या हमदर्द जो उनका वो सब बात देखेगा, लेकिन उसके सारे के जो आसपास के जो देश है उसको तो कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो भी बताना चाहिए नहीं। अब देखो सर ये चाइना है और ये अमेरिका है ना, अब वो इसको मारिया वो इसको मारिया, जो इसके आसपास जो देश हैं, इधर भी देश है इधर भी देश है, तो वो क्या वो देखते रहेंगे तमाशा क्या? वो भी तो हमला करेंगे, वो भी तो मारेंगे। वो भी तो कुछ ना कुछ उनको मदद करेंगे। अब यहाँ आके मुझे आपकी जो वीडियो है उस पर थोड़ी डमाडोल लग रही है, चीन और अमेरिका वहाँ तो ठीक है, अब जो दूसरे देश उसके बारे में आप कोई जिक्र भी नहीं कर रहे हो यार। Though it could likely keep American carrier battle groups out of the South China Sea for the first week or two of the war, China would be helpless to prevent a naval blockade by US attack subs. India, also reliant on South Pacific trade routes, would certainly dispatch its naval forces to attempt to break a US blockade, but would face the same issues in challenging US subs that China would, having only 15 active submarines and also lacking in modern anti-submarine warfare capabilities. The Indian Navy would quickly find itself overpowered by American attack subs. अरे यार लो अपना जो भारत है ये बंदे देखो उसके जो है नौसेना वो भी कमजोर निकले, वो भी कोई मदद नहीं कर सकता। बात ये है कि अपना जो भारत देश है उसका जो दुश्मन है वो सब जमीनी है, तो इसीलिए ये देखा नहीं आया कि उनने जमीनी सेना और हवाई सेना ये दोनों को
कर रखा है। इसकी वजह से वो जो सेना नदी की सेना हाँ। उसने ज़्यादा वो नहीं दिया। अब वो अमेरिका जो है, हाँ। अमेरिका जो बीच में है, हाँ। तो उसके लिए वो बीच में पानी के, उसको तो हर तरफ से तो पानी मिल रहा वो है, ही। इसलिए उसकी पानी की सेना मजबूत है। Employing a combination of its submarine and anti-satellite assets, the US would likely break through the Chinese ballistic missile shield within 30 days and enact a complete blockade of the South Pacific, अच्छा। strangling regional powers economically. अभी तक जो आपने यहाँ पे दिखाया है चीन अमेरिका अब रूस या जो दूसरे देश है वो पहले हम चले बेरे चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी तो अमेरिका पर हमला कर रहे होंगे। हाँ। और अमेरिका की लड़ाई तो पूरी दुनिया में चल रही है। वो बोला उनका कुछ नहीं करे, चीन अमेरिका करे जाएगा। With a blockade of Middle East oil exports, the global war would then become a war of attrition, with the US starving out the world's major powers while able to sustain itself off its own domestic oil reserves. Having little to fear from a European transatlantic offensive due to Europe's lack of major military transport capabilities, American forces would be free to initiate ground offensives against Canada and Venezuela in order to seize its oil reserves as well. Ultimately, the US Navy, the largest and best equipped in the world, वायु सेना से ज्यादा नौसेना उसके ऊपर भारी मतलब उसकी जो सेना है नौसेना वो भारी पड़ रही है दुनिया। क्योंकि उसको सारे काम समुद्र के रास्ते से है ना, तो इसलिए उसने समुद्र अपने इंडिया में कर रखा है। उसके व्यापार जो भी कुछ उसके कारोबार जो भी वो जो भी कुछ है वो सब समुद्री रास्ते से would be the deciding factor in a global war. With such overwhelming firepower superiority, the United States would be able to fight defensively and without launching any major ground offensives outside of North America. Fielding a larger fleet than the next 8 navies combined, the US Navy, backed by the US Coast Guard, could easily defend the Atlantic sea lanes from any European incursion while enacting blockades of major oil shipping routes through the Persian Gulf and Indian and Pacific Oceans. While the world would eventually be able to muster a large enough force to threaten the US, current military capabilities across the globe would be insufficient to prevent these naval blockades and would require years of buildup and expansion of navies from every modern nation. With the majority of global oil trade shut off by naval blockade, however, European and Asian economies would quickly shrink or outright collapse, making such a buildup improbable. अब आपने जो है जो टुकड़े में आपने तो ये अमेरिका ये अमेरिका, तो ये अमेरिका जो है वो तो है उसको आपने फोकस कर दिया, दूसरा देश क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? ये बात भी सही है। अगर अमेरिका और चीन भिड़ रहा है आपस में, तो भारत देश क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, रसिया देश क्या कर रही है, वो देश क्या कर रहा है? जब अमेरिका और चीन में लड़ाई हो रही है, आपस में भिड़ रहे हैं ये लोग, तो फिर ये देश ये शांति बैठे, ये खामोश बैठे। और जबकि आप है ना अमेरिका से पूरी दुनिया की जंग बता रहे हो। क्या अमेरिका एक तरफ पूरी दुनिया जो है भैया अमेरिका का पूरे देश से है, पूरी दुनिया के। And ensuring an eventual US victory. Yet that victory would come at a titanic cost to even the US's own economy, and in the end, the entire global economy would likely shrink to levels not seen since the end of the Second World War. So, how do you think this scenario would have played out? Let us know your thoughts in the comments. Also, be sure to check out our other video called North Korea versus the United States. Thanks for watching, and as always, don't forget to like, share, and subscribe. See you next time. अब आपने सर जी खुल के तो बताया ही नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। आपने तो बस आधा ही बताया, आधर में लटका दिया आपने हमें तो। यानी वो अपने कुछ वो नहीं है कि आगे जीता कौन हारा कौन। अपन तो हेडफोन उतारो और अपन तो इसका विश्लेषण करते हैं अपन तो। ये हेडफोन उतरा, ये हमारी टोपी लगी, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपने वीडियो जितने आपसे मिले हो सके, जितने आपको उसके हिसाब से वीडियो तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, इसमें कोई दोराई नहीं। आज मतलब ये वीडियो देख के पता चल गया है कि है ना कि भैया अमेरिका कितना पावरफुल और कितना शक्तिशाली है, कि सारे देशों में देखा जाए तो अमेरिका ही पावरफुल है। हाँ, अमेरिका का की जो ताकत जो शक्ति अपने इस वीडियो के माध्यम से कि उसमें मुझे तीन पैन नजर आ रहा है। एक तो अमेरिका की दोनों सेना, एक उसकी हवाई सेना, और एक जो उन्हें जगह उन्हें सैनिक जो बेचारे के, ये तीनों पैन उसके ऐसे है कि उसको जितने में उसके मदद कर सकते हैं। चाचा जी देखो, ये तो इसने अपना ख्याली पुलाव बना रखा है ना कि अगर अमेरिका में ऐसा, अगर अमेरिका के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा, लेकिन अमेरिका ने पहले से सोच रखा है
कि सारे इंतजाम से है वो अपने, ये कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, या हमला करने की बारी है, या मेरे से कोई युद्ध लड़ने की बारी है, तो मैं ये सारे खेल ऐसे खेल सकता हूँ, खेलूंगा मैं। और वो जो उसका सेटेलाइट वाला जो हथियार है, हाँ। जिसकी अपने को अभी तक पता नहीं, लेकिन आज अपने को मैंने पड़ा, लेकिन वो सेटेलाइट तो कोई कमाल का हथियार उसका है तो मेन हथियार है। हाँ, कमाल वो का फोड़ देगा, बर्बाद कर देगा, तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, समझ लो। ये वो तो कही ना, लेकिन हाँ भाई, वो नेट बंद, फोन बंद, हर जितनी भी चीजें हैं हाँ, वो सब सब बंद, सेटेलाइट से सैटेलाइट से चलने वाली बिल्कुल। चीजें। अब अमेरिका जो है वो उनके सेना को बर्बाद कराए तो हम करेगा। अब वो दूसरी चीज़ों को बर्बाद कराए। अब जैसे सऊदी अरब, उनका क्या है पेट्रोल, अब जैसे चाइना का उनके फैक्ट्री है, ये तो साला उनको भी बर्बाद कर देगा, ये तो साला यार। देखो चाचा जी, वो वाली कहावत है ना, हाँ जंग में और प्यार में हाँ, सब जायज है, हाँ तो वो वाला काम हो रहा है। बस वही तो वही अब क्या कभी जो वाकई में जगह तो जो आपने जिस हिसाब से वीडियो बने और जो इसमें आपने जो पॉइंट दिखा है, वाकई में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार तरीके से, और आपने इतने अच्छे तरीके से समझा है कि हमको बहुत मजा आया। लेकिन ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं आपकी कुछ कमियां भी हमको नजर आई लगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं कि ये वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी, और वीडियो के माध्यम से हमें पता चला कि कोई इसमें कोई दोहराया नहीं कि अमेरिका बहुत अच्छा, मतलब बहुत महान देश है, बहुत ताकतवर देश है। और यहीं समाप्त करते हैं ये वीडियो, अगली बार फिर मिलेंगे। नवाज, तब तक के लिए धन्यवाद।